Thank you, sir, for inviting me. So, good evening, everyone. I'm Nidhi, and I have done my graduation from Gargi College in Political Science and currently pursuing my master's from Department of Political Science and enrolled in Lady Shri Ram College for Women, University of Delhi. Today, I'll talk about environmental impact of cross-border infiltration in India. But firstly, I would like to express my heartfelt gratitude towards GSTS team, graduate scholars talk series, who had cooperated with me and making this talk possible. I would like to thank to Professor Kumar, who had guided me throughout this talk. Also, I would like to thank to guest of honor of today, Professor Mangal Dev. Now, I would like to share a very small introduction as why I chose this topic, how the idea I got. So, on this Independence Day, one thing was brought into sharp focus in the speech by our Prime Minister Narendra Modi. He highlighted how these infiltrants are snatching the bread and butter of our youth, targeting our daughters and sisters, and capturing forest and affecting the wildlife and opportunities which belongs to these innocent tribals. So, there are five objectives of my talk, and they are as following. Firstly, what is infiltration? Linkages with environment, effect on the economy of local area. Fourthly, consequences, social and cultural. And lastly, politics and politics, policies, and partnership. And in the end, I will brief what steps can be taken so that these infiltrants cannot be able to disrupt India. So, coming to my first objective, what is infiltration? So, infiltration is defined as the unauthorized settlement or entry of individuals across national and international borders into ecologically sensitive areas, which possesses a growing environmental concern in India. While it is often addressed through the lens of national security, but the ecological consequences of infiltration remain under examined. This talk will cover the environmental impact of infiltration, remain uh, impacts of infiltration on forest, wildlife, and biodiversity, particularly in India's border and forested zones. Illegal encroachment contributes to deforestation, habitat fragmentation, and over exploitation of natural resources. Border areas such as Jammu and Kashmir, Rajasthan, Assam, West Bengal, and the Northeast are the biodiversity hotspot and witness significant environmental stress due to activities like logging, poaching, grazing, and unregulated land use. These disrupt wildlife corridors and endanger species like blackbuck, snow leopard, Asian tiger, and one-horned rhinoceros. The damage also affects indigenous conservation communities like the Bishnois of the Rajasthan, whose eco-spiritual traditions are increasingly undermined. Infiltration has profound impact on environment, particularly on forest ecosystems, wildlife, habitats, and regional biodiversity. India's landscape of ecology is immensely diverse, encompassing arid deserts, Himalayan highlands, tropical forests, riverine systems, and coastal zones. The northern and northeastern frontiers of the country, spanning states like Jammu Kashmir, Assam, and Arunachal Pradesh, are not only geopolitically sensitive but are also home to rich biodiversity. Infiltration in these regions, whether driven by political unrest, resource scarcity, or ethnic displacement, has a cascading effect on forest resources, wildlife movements, and local conservation efforts. In Indian context, infiltration has different manifestations across regions, each with distinct environmental impacts. जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अवैध प्रवास के कारण अत्यधिक मात्रा में ओवरग्रेजिंग की समस्या, उसी कारण स्नो लेपर्ड और हिमालयन इवेक्स जैसी प्रजातियों को खतरा पहुंचा है। पूर्वोत्तर राज्यों में पोरस बॉर्डर्स की समस्याओं ने घुसपैठियों को आरक्षित क्षेत्रों व संरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश पाना आसान बना दिया है।
In the result, habitat destruction, rampant poaching, particularly of one-horned rhinoceros, elephants, Bengal tigers, and others. And the similar condition we can see in Rajasthan. Cross-border infiltration affects the desert ecosystem and the species like blackbuck and chinkara. The Bishnoi community is known for their deep-rooted spiritual and ecological ethos and has been at the forefront of environmental protection in Rajasthan. So moving on to the second objective. Sir, please move to this last slide only. Yes. So how infiltration affect the environment? But before, I'll briefly discuss what are the factors which induces the people for illegally migrate or infiltrate in any country. Like the factors are economic, political, environmental, and porous borders. When we look at economic factors, lack of job opportunities, poverty, security, basic amenities, they push people to infiltrate in any of the region. In terms of political violence, civil wars, persecution, human right violation, etc. And when we come to the environmental conditions like climate change, natural disasters like floods, cyclone, and earthquakes, and lastly, the porous borders of any area induces these illegal settlers to settle in protected areas like forest. Now, let's discuss in detail linkages with environment. So please move on to the another slide. Yes. So when we look India, its varied geography ranging from the high Himalayas to desert plains and lush forest makes it one of the most ecologically rich country in the world. However, this environmental wealth is increasingly threatened by unauthorized human activities, most notably infiltration across border regions. Each impacted region reflects a unique combination of ecological vulnerability, species composition, and human pressure. Regions like Jammu and Kashmir and Ladakh, Assam, and Northeast India, also the Rajasthan and the Thar Desert, Gujarat Kutch region, where infiltration has triggered substantial ecological consequences. जम्मू और कश्मीर में ये घुसपैठिए सबसे पहले वनों को उजाड़कर टेम्परेरी शेल्टर्स का निर्माण करते हैं, अवैध रूप से खेती करते हैं, फायरवुड के लिए वनों को काटते हैं, जो कि सॉइल इरोजन, अल्पाइन वनस्पति का दोहन, यहाँ तक कि वहां के जीवों जैसे कि स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन फौना को नुकसान पहुंचाता है। 2020 की एक स्टडी बताती है जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कराई गई थी, दाचियन नेशनल पार्क में जो हैंगुल कश्मीरी स्टैग है उसकी संख्या में कमी पाई गई है। असम एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जब हम बात करते हैं, द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट विच आर रिच in its natural resources and the most threatened ecological region because it connects with international borders like Bangladesh, so Myanmar and China. So यहाँ पर जब हम infiltrators की बात करते हैं तो वो जंगल की जो जमीन है, काजीरंगा, मानस और नमई से जो नजदीक है वहां सेटल होते हैं और अवैध शिकार द्वारा भरण पोषण करते हैं, जैसे कि वन हॉर्न राइनोसोरस आर स्पेशली द वनरेबल देयर। साथ ही साथ यहाँ की जो कम्युनिटीज हैं उनके साथ इनकी बहुत ही तनातनी रहती है। 2023 का एक विवरण है जो कि यह बताता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क की तरफ से आता है कि अवैध लोगों द्वारा पार्क की बाह्य सीमाओं में अतिक्रमण किया जा रहा है। साथ ही वन हॉर्न राइनोसोरस की संख्या में कमी पाई गई है। When we look at Rajasthan border district like Jaisalmer and Burma shares a long and porous boundary with Pakistan. The region is ecologically fragile, arid and semi-arid ecosystem home to unique deserts, flora and fauna. So, sir, could you please move on to the another slide? Yes. So when we look at Rajasthan, border district like Jaisalmer and Barmer shares a long and porous boundary with Pakistan. The region is ecologically fragile, arid and semi-arid ecosystem. तो अवैध रूप से चराई व पेड़ों के तनों को काटना is resulting in rapid desertification in Rajasthan.
ब्लैक बक एंड चिंकारा जैसे जीवों का शिकार, जो कि राजस्थान की बिश्नोई जाति के लिए पूजनीय है, 2018 की एक रिपोर्ट बताती है, जहां बिश्नोई टाइगर बोर्ड के मेंबर बताते हैं कि कैसे अवैध शिकार की घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में सामने आ रही है और काले हिरण की संख्या बहुत रूप से घटती नजर आ रही है. Each of these regions present a distinct ecological socio-political landscape, but all share a common threat, that is infiltrant act as disruptive force that intensifies environmental degradation. The ecological consequences result in damage to forest, wildlife, population, and diversity. These consequences are not just incidental but byproduct or direct outcome of the ecological but the ecological disruption which is caused by the unauthorized human presence. Deforestation and habitat loss of wildlife, habitat fragmentation, wildlife poaching, and illegal trade ultimately resulting in biodiversity loss and ecosystem imbalance. Human infiltration often brings non native species and pathogens into fragile ecosystems, also leading to long term genetic threat in breeding patterns in isolated wildlife populations. So, in this slide, I have shared that India shares its border with several countries like Pakistan, Nepal, Bangladesh, Myanmar, and others. And we, it is interesting to note that Bangladesh shares the largest border, approximately 4,096 kilometers. So it is very difficult uh, to see these areas or monitor these areas. Moving on to the third objective, effects on the economy of local area. The illegal infiltration strains both employment and public services. Most of undocumented migrants work in agriculture, construction sites, and as domestic laborers, and leading to flooding the market with cheap laborers. This depresses wages and displaces local workers. It basically increases the strain on public services and infrastructure. The public resources become overstressed, diminishing the quality and availability for all residents and requires increased government expenditure. It also have social and cultural consequences. While the ecological consequences of infiltration are often discussed in terms of forest loss, wildlife decline, and biodiversity threats, these effects do not occur in isolation. They intersect deeply with the lives, values, and survival of human communities that live within or near these vulnerable ecosystems. Among these, indigenous groups, forest dependent populations, and culturally rooted conservation communities play a vital yet underappreciated role in sustaining India's ecological heritage. Infiltration into border and forested areas not only disturbs the physical environment but also threatens the socio-cultural fabric of these communities. It fuels social tensions, disrupts traditional conservation practices, increases human wildlife conflict, and marginalized groups that have served as environmental stewards, like the Bishnoi community. Ultimately, infiltration is not merely an ecological issue, it is a socio cultural and one of the affecting issue to the people who have safeguarded India's forest and wildlife for generations. So, moving on to the last objective, that is politics, policies, and partnership. So, we look politically, illegal infiltration presents dangerous incentives like most political parties have embraced them as vote bank and facilitating fake documents, helping these infiltrants settling on government land, especially along riverbeds and forest areas, because
There are places, because these are the places which are far from the established cities and towns, and the government turned a blind eye to consequences. Such actions compromise natural security for short term, but the short term electoral gains and alienate the local populations. These kind of actions deepens the mistrust between citizens and the state. Issues like this, if unaddressed, it could lead to unrest, especially in vulnerable regions where demographic pressures are mounting. So, finally, I would like to wrap up my topic uh, while giving some conclusions and some insights. The ecological degradation caused by infiltration across India's sensitive border regions require more than conservation. It demands for strategic policy reform. First is environmental intelligence in the border policy. It should be embedded into the mandates of border security force. Their training should also include identifying and reporting ecological damage. And second is collaborative surveillance. Missions involving the forest department and border forces can increase the effectiveness of monitoring infiltration linked ecological violation. Thirdly, ecological risk zoning. Using of GIS mapping to identify eco-sensitive border zones where surveillance, patrolling, and conservation effect must be prioritized based on the vulnerability levels. Strengthening environmental laws and enforcement mechanisms. India has a robust set of environmental laws, including Forest Conservation Act, Wildlife Protection Act, and Environmental Protection Act. However, enforcement in remote, politically sensitive, and conflict prone border areas remains weak. So, to, to strengthen provisions in Wildlife Protection Act 1972, introduce clauses that treat infiltration related poaching or habitat destruction as aggravating factors deserving stricter penalties. Secondly, community based conservation and empowerment. Communities living in border areas, tribal groups, forest dwellers, and conservationist societies like the Bishnois are often first to witness the environmental effects of infiltration, but they are rarely involved in decision making or policy design. So, to lastly conclude, once Atal Bihari Vajpayee said, "We can change our friends, but not our neighbors." So do the Kautilya wrote in the Arthashastra. In the territories lying on the border, the conqueror should establish fortified towns populated with trustworthy people and soldiers. It ultimately depicts that foreigners should not be allowed to settle in the border territories. So, thank you. Uh, all right. So thank you, Ms. Nidhi. That was really a very great presentation today. And the way you have explained all the aspects of the infiltration, how it is connected to the various yet the contradictive themes of the human culture and the the relationship between the human and the nature. So it was a very well presentation. Now let's move towards the Q&A session and let's take the questions by our audience. Also, I would also like to remind our audience that now we have opened the chat box. So if anybody of you have any questions regarding today's topic or regarding today's session, you can drop your question into the chat box. I'll take that. All right. So the first question, Joe. Okay, maybe Salin's internet connection is not perfect, so I just replicate Salin Rathor's idea that how can regional cooperation with neighboring countries help mitigate the environmental impact of infiltration? That means कैसे जो neighboring country के साथ हमारा relation और
आपने बताया है, लेकिन इसको थोड़ा और एलेबोरेट करके शायद यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई शुभम तिवारी। सो ओवर टू यू निधि। Unmute yourself, Nidhi. Unmute yourself. Sorry, sir. Like, I have actually heard the half of the question. Could you please repeat it? Okay. So how can regional cooperation with neighboring country help control this problem? Simple. कैसे आसपास के देशों के साथ सहयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही आपका क्वेश्चन है। Okay, sir. So, sir, what I think, regional cooperations like SARC and AU, even ASEAN, they can be a very good platform to resolve this like kind of issue where we can like जहाँ पर हम सर ये देख सकते हैं कि जब हम इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करेंगे तो ये हमें हेल्प करेंगे कि इन्फिल्ट्रेटर्स एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री ना जा पाए। थैंक यू, गुड। एक और क्वेश्चन है, हाउ इलीगल माइग्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इनफिल्ट्रेशन। illegal migration. Okay, sir. Sir, like illegal migration basically refers to अवैध प्रवास और वहीं पर हम देखते हैं अवैध घुसपैठ। सर, मैंने जहाँ बताया कि प्रवास कई कारणों से हो सकता है जिसमें हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इवन हम कई कारण देखते हैं जैसे कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण या फिर किसी एनवायरमेंटल कंडीशंस खराब हैं किसी रीजन की तो लोग प्रवास करते हैं। वो भी अवैध ही होता है क्योंकि आप बिना अनुमति की सरकार की आप किसी सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। पर फिर भी इनके बारे में सरकार पता लगाती है। जैसे कि सर, जब हम 1971 का बांग्लादेश युद्ध देखते हैं तो वहां से बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर प्रवेश करते हैं जिनके बारे में सरकार को पता लगता है क्योंकि पड़ोसी देश में युद्ध चल रहा है। पर जहां बात हम इन्फिल्ट्रेशन की करते हैं तो सर इसमें वो लोग पता ही लगने नहीं देते हैं कि वो सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। वो ऐसी ही सीमाओं का चयन करते हैं जहां पर सरकार को इस बात का पता ही ना लग सके कि वो सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। Okay, so Nidhi, that was really well answered. I don't know. I think somehow my meeting was continuously crashing, so I'm extremely sorry. तो एक सवाल जो मेरा था वो ये, क्योंकि आपने बताया कि जो घुसपैठ है, जो इन्फिल्ट्रेशन है, उसके ढेर सारे प्रभाव होते हैं। एक तो सामाजिक प्रभाव है जो कि ह्यूमन और उनकी डेली बेसिस पर जो लाइफस्टाइल है उसको इफेक्ट करते हैं, और एक प्राकृतिक प्रभाव होते हैं जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, इलीगल पोचिंग और इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं। उसी में से एक प्रभाव जो पड़ता है वो वाटर रिसोर्सेज पर पड़ता है। नदी है या स्टोरेज है, बिकॉज राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम में जो कुल्स और कुल्स का जो है जहाँ पर वाटर स्टोर किया जाता है, तो इस पे जो वाटर रिसोर्सेज पर जो प्रभाव पड़ता है इन्फिल्ट्रेशन का या घुसपैठ का, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? क्या मेजर्स वहां पर लिए जा सकते हैं? सर ठीक है, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में आया। तो सर इसके लिए मेरा आंसर ये होगा कि वहाँ के जो कम्युनिटीज हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, हमें उन्हें पॉलिसी डिजाइन में इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि वो बेहतर ढंग से समझते हैं कि किस तरह से हम अ, उनके लिए उनके लिए कंक्लूजन्स बना सकते हैं या फिर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहला तो उन्हें इंक्लूड करना चाहिए। दूसरा सर, जैसे कि वो रहने के लिए जगह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी प्रकार वो ऐसे अन्य संसाधनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि पानी। बिकॉज खाने से पहले तो सर पानी की जरूरत है, तो दे विल बी यूजिंग दैट ऑल्सो। सो सर मुझे ऐसा लगता है इसके लिए सबसे जरूरी ये है उन लोकल कम्युनिटीज का
इसमें उन्हें इसमें इंक्लूड करना, ताकि वो इस पर नजर रख सके और सरकार को बता सके। ऑलराइट, ये बिल्कुल ठीक बात है कि लोकल कम्युनिटीज़ का वहाँ के रिसोर्सेज को समझने में बहुत बड़ा योगदान होता है, तो वो इस चीज़ का इंफॉर्मेशन भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑलराइट, द लास्ट क्वेश्चन, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम टेकिंग बिकॉज़ आई कैन नॉट सी more questions in the chat box, or maybe I have missed one. So the question is that in what ways do security infrastructure and fencing activities alter the natural landscape and local ecosystem? जो हम फेंसिंग कर देते हैं इन्फिल्ट्रेशन के बेसिस पर कि यहाँ पर फेंसिंग कर दी, वहाँ पर फेंसिंग कर दी, इस वजह से जो ओवरऑल इकोसिस्टम पर या जो ओवरऑल लैंडस्केप सिस्टम है उस पर जो डिस्टरबेंसेस क्रिएट होते हैं, उन डिस्टरबेंसेस को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, और वो डिस्टरबेंसेस क्या किस तरीके से हार्मफुल होते हैं इकोसिस्टम के लिए, हैंस और इकोसिस्टम के साथ ही उन लोगों के लिए भी जो इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके सर, मुझे भी ऐसा लगता है कि जो ये मॉडर्न टेक्निक्स हैं फेंसिंग की, या फिर बचाव करने के लिए कुछ इन उपकरणों को लगाने की, तो सर मुझे इसमें लगता है कि हम इंडिजिनियस तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर हम मतलब दिस कुड बी अ आइडिया कि जहाँ जहाँ पर हम फेंसिंग की जगह कांटेदार पौधों को उगा सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है जो रोग के लिए भी साबित होगा, और साथ ही साथ ये वहां के वनस्पति को भी मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यस, ऑलराइट, मतलब अगर हम फेंसिंग भी करें तो इस तरीके से करें ताकि वो हमारे इकोसिस्टम के साथ ब्लेंड कर पाए, ऐसा ना हो दैट आउट ऑफ नोवेयर कुछ एलियंस आए। ओके, ऑलराइट, सो द लास्ट क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग इज दैट आपका इस इनिशिएटिव के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या नई चीजें आपने इस इनिशिएटिव के साथ जुड़कर सीखी पूरे वीक में, थ्रू आपके फर्स्ट प्री मीट से लेकर लास्ट प्री मीट जो आज ही हमने संडे मॉर्निंग में की थी। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू सी इट, नॉट जस्ट द इनिशिएटिव बट आल्सो seeing yourself in the initiative? How do you see yourself into this initiative? Yes. सो सर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक टू द GSTS टीम कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं जिस बारे में सोचती हूँ, जिसे मैंने इसी वर्ष 15 अगस्त को सुना और मुझे सोचने का मौका मिला प्रधानमंत्री की स्पीच द्वारा, पर मैं अ, उन पॉइंट्स को या फिर उस सोच को कहीं प्रेजेंट करना चाहती थी, जो कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला जहाँ मैं प्रेजेंट कर पाई। और दूसरा सर, मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, द the overall experience was really very good. All right, so thank you so much निधि। आपका पूरा व्याख्यान वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा हमने आपके व्याख्यान से, बहुत सारी नई चीज़ें हमें सीखने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमें उम्मीद है कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और आगे आने वाली टॉक्स में अपनी भागीदारी आप दिखाएंगे। आपका बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद मिस निधि। नाउ प्रोसीडिंग द सेशन फर्दर, मैं चाहूंगा अब हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगलदेव सर को एक बार फिर से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उनके आखिरी कुछ उनके कंक्लूसिव रिमार्क्स के लिए, न केवल इस इनिशिएटिव बल्कि आज के जो टॉपिक है, आज के टॉक, और अगर वो कुछ सजेस्ट करना चाहें हमारी आज की स्पीकर को। सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू शैलेंद्र जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, I want to congratulate Nidhi Sharma. Very confidently present your paper. Very insightful, informative, factual, analytical also. आपने बहुत ही विश्वास के साथ इस पेपर को प्रेजेंट किया, तो आपको बहुत बहुत बधाई। और आगे भी आप अपने जो है एकेडमिक जर्नी को इसी प्रकार और इसी सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ाएं, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। तो सर्वप्रथम आपको बधाई निधि जी, बहुत अच्छा पेपर और बहुत ही आपने अच्छे ढंग से उसको विथ जो है मैप और विथ एग्जाम्पल आपने उसको प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, और बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा, सर्वप्रथम मैं आज के लिए जो है जिस टीम और जिसके माध्यम से मैं यहाँ आमंत्रित किया गया हूँ, उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि कॉलेज लेवल पे और जो सबसे सुंदर और सबसे इम्पोर्टेंट
बात GSTS टीम और रिस्पेक्टेड मनीष सर की मुझे लगी कि इसमें जो स्पीकर का रोल है वो स्टूडेंट्स को दिया जाता है, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस में जो है टीचर्स प्रोफेसर्स तो हम लोग तो बोलते ही हैं, सुनते ही हैं, लेकिन बोलने में किस कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टूडेंट पहली बार या दूसरी बार या शुरुआत में स्टार्टिंग में प्रेजेंट कर रहा है, और बहुत ही सुंदर ढंग से आपने क्वेश्चन का आंसर भी दिया निधि जी, जैसा मनीष सर ने भी पूछा, शैलेंद्र जी ने भी पूछा, तो आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर दिया। ये एक लर्निंग प्रोसेस है, तो आपको प्रमोट करने के लिए है ये हम लोग प्रोफेसर या हम टीचर्स बैठे हुए हैं। तो मनीष सर ये बहुत ही अच्छा, और इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आप बच्चों को ये मौका दे करके जो है स्टूडेंट्स को, बहुत अच्छी बात सर, और इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, और मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं आगे के लिए देता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बच्चे जुड़े और बहुत सारे प्रोफेसर्स जुड़े, जिससे इसका लाभ बच्चों को मिल पाए। और जिस प्रकार मैं देख पा रहा हूं कि मनीष सर और GSTS की पूरी टीम 245 कंटिन्यूअस लेक्चर को ऑर्गेनाइज किए हैं। 2021 से स्टार्ट है ये जर्नी आप लोगों की, तो आप लोगों को जर्नी के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम लोग बात करते हैं आज का जो टॉपिक है, और जिस टॉपिक पे निधि जी ने जो है अपनी बात रखी, उसमें अगर मैं देख पा रहा हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर के उस सेंटेंस से, अगर सेंटेंस को ही देखा जाए प्राइम मिनिस्टर का, जिस बेस पे इन्होंने बोला कि जो है उन्होंने जो जो कोर 2 एरिया उन्होंने चूज किया, अगर उसको हम थियराइज करेंगे तो उसमें एक आता है, जो उनका सेंटेंस था उसमें एक आता है सिक्योरिटी पर्पज, और दूसरा आता है कि जो लोकल रिसोर्सेज है उसका एक्सप्लॉइटेशन इन्फिल्ट्रेशन से या इलीगल माइग्रेंट से किस प्रकार होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के उस सेंटेंस में ओवरऑल जो है आपने जो स्टार्टिंग की, उसी में जो है जो सबसे मेजर कंसिक्वेंसेज या मेजर चैलेंजिंग इशूज है सिक्योरिटी और जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है रिसोर्सेज का या होगा, उस कंटेक्स्ट में अदर जो इशू आपने ओवरऑल डिस्कस किया, उसमें जैसे मैंने देखा कि उसमें पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज, सोशल एंड कल्चरल जो इम्पैक्ट है इन्फिल्ट्रेशन का, डेमोग्राफिक चेंजेस क्या हो सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी है, डिफॉरेस्टेशन है, वाइल्ड लाइफ के कंटेक्स्ट में, और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इन सभी सब्जेक्ट, इन सभी इशूज को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया। तो मेजरली इन सब को आपने इस पेपर में टच किया और उसको बताया कि किस प्रकार, लेकिन जो मैं एज ए टीचर आपको या जुड़े हुए सभी मेंबर्स को, जिसमें इस पेपर के थ्रू जो आपने बताया उसमें मैं ऐड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी को अगर हम थियराइज या उसको समराइज करने का प्रयास करें, तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, ग्लोबल ऑर्डर कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है आज की डेट में। और अगर साउथ एशिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में जो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं जनरली हिमालयन रीजन में है, या आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, इंडो बर्माज रीजन है, वेस्टर्न घाट है, इन सब पे अंडमान निकोबार है। तो मैक्सिमम जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो इन्वायरमेंटली भारत इंडिया के वही रीजन ज्यादा इन्वायरमेंटली जो है कह सकते हैं कि परस्परस हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन हो गया, या जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, या फिर हिमालयाज रीजन हो गए। और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इंडिया के कंटेक्स्ट में, चाहे वो सिक्योरिटी का हो, डेमोग्राफी का हो, या फिर जो है डिफॉरेस्टेशन का हो, जैसे आपने बताया कि राजस्थान में किस प्रकार जो है बहुत सारे एग्जांपल आपने दिया, और जम्मू कश्मीर तो पूरा पूरा ही जो है अभी लेटेस्ट जो फ्लड और इस तरह की प्रॉब्लम हुई थी, उसमें मैंने जो कुछ आर्टिकल्स मैंने रीड किया उसमें मैंने देखा कि किस प्रकार बहुत सारे बंकर और बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आई है जो है इस तरह के इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल चेंजेस से। तो आज की डेट में केवल जो सिक्योरिटी चैलेंजेज है उसमें जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेज है आई थिंक वो बहुत बिग चैलेंज बन चुका है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जैसे एक क्वेश्चन शैलेंद्र जी ने आपसे पूछा कि कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो आपने कहा सार क्या इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में स्पेशली नेबरिंग के साथ जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें इकोलॉजी आज ए टूल्स या इन्वायरमेंटल इश्यूज को एज ए टूल्स भी यूज किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ऐसे रीजन में चाइना के सपोर्ट से पाकिस्तान कुछ ऐसा डैम बनाना या चाइना डैम बनाना चाह रहा है, ब्रह्मपुत्र रिवर की बात जो उसके पानी को, इवन इंडिया और पाकिस्तान में जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है तो भारत या पाकिस्तान
पानी को रोकना या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस, तो इकोलॉजिकल एक टूल्स के रूप में इन्वायरमेंट, ये सब जो आपने प्रस्तुत किया इसके साथ तो ये है ही है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो जो अगर किसी नेबर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है तो इन्वायरमेंटल, इकोलॉजिकल और इन सबको एज ए टूल्स भी यूज कर रहा है अदर कंट्रीज के बायोडाइवर्सिटी को, अदर कंट्रीज के जो है या जो भी जिससे प्रॉब्लम हो उनके साथ। बिहार में बाढ़ की जो प्रॉब्लम है उसके साथ नेपाल, जब तक नेपाल के साथ अगर रिलेशन के साथ साथ उस पर एक्शन नहीं होगा तब तक बिहार में फ्लड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो जो आपने जो प्रस्तुत किया उसमें अगर इन सब जो बहुत सारे एग्जाम्पल आपने दिए, या नॉर्थ ईस्ट का इशू है, जम्मू कश्मीर का इशू है, इन सभी इश्यूज में अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में देशों के बीच ऐसा नहीं, बहुत सारे जो सरकार की तरफ से इको सेंसिटिव बॉर्डर प्लानिंग की बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है, ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन की बात हो रही है, इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास, ये इनिशिएटिव तभी सक्सेस हो पाएंगे या होते हैं जब दो देशों के बीच रिलेशन अच्छे हों। अब भारत पाकिस्तान या भारत चाइना या भारत बांग्लादेश के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे तो उसमें जो इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसको एज ए टूल्स, जो मुझे लग रहा है वो देश यूज करने लगते हैं, और ये और भी ज्यादा जो है डेंजरस और खतरनाक हो रहा है और होने की संभावना होती है। तो इसलिए जो है आज की डेट में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, साउथ एशियन पॉलिटिक्स है, इंडिया के कंटेक्स्ट में इन जो इन्वायरमेंटल इशूज हैं या फिर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन है, वो इंडिया के लिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए, रिसोर्सेज के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए एक चैलेंजिंग इशू है, इसमें कोई बट नहीं है। और आपने बहुत अच्छे से इसको प्रस्तुत किया। आवश्यकता है कि जो ऐसे एरियाज हैं जो हाईली सेंसिटिव हैं, हाईली बायोडाइवर्सिटी और या फॉरेस्ट युक्त है, उनपे सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड लोकल जो कम्युनिटीज हैं उनको जब तक अवेयर नहीं करेंगे तब तक जो है इस तरह के इश्यूज, इन्फिल्ट्रेशन और इलीगल माइग्रेंट्स का बना रहेगा। तो आई थिंक कि आज के टाइम के अनुसार इतना ही बहुत है और बहुत अच्छा। अगेन थैंक यू सो मच मनीष सर एंड शैलेंद्र जी एंड निधि जी एंड सभी GSTS की टीम को। मेरे लिए इट्स माय प्लेजर कि जो है मनीष सर ने जो है इनवाइट किया और आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिला, ये मेरे लिए भी बहुत ही गौरव की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने ज्ञानवर्धक बातों को हमारे समक्ष रखा, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। नाउ proceeding further, it's time to invite our next speaker for this Sunday, and I would like to invite Mr. Rahul Jaiswal. He is a graduate scholar from Shyam Lal College Evening. And on next Sunday, he will be delivering his talk on the topic Origin of Print Media and its Role in Modern Warfare. So I would like to invite Mr. Rahul to elaborate his objective for the next talk. Thank you, sir. Sir, is I am audible? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। Sir, my name is Rahul Jaiswal and I am currently pursuing BA program Hindi plus History course in Shyam Lal College Evening, University of Delhi. मेरा जो टॉपिक है अपकमिंग GSTS कन्वर्सेशन का वो है ओरिजिन ऑफ प्रिंट मीडिया एंड इट्स रोल इन मॉडर्न वॉरफेयर। मैं अपने टॉपिक के विषय में जो कुछ हाइलाइट्स हैं वो यहाँ पे बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस प्रकार प्रिंट मीडिया का ओरिजिनेट हुआ, ये किस प्रकार ओरिजिन हुआ प्रिंट मीडिया का चाइना से, और फिर ये दुनिया भर में किस प्रकार से फैला। इसके बाद हम बात करेंगे कि आज के समय प्रिंट मीडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से प्रिंट मीडिया के ग्रोथ में काफी दिक्कतें आई। फिर हम इसके बाद से एक रिसर्च पे फोकस करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने किया था प्रिंट मीडिया के डेक्लाइन के ऊपर, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं जैसे मार्टिन लूथर, फ्रांसिस बेकन, इन्होंने क्या कहा प्रिंट मीडिया के बारे में। और फिर हम इसके बाद से बात करेंगे कि आज के समय जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें प्रिंट मीडिया का क्या रोल है। इसमें कई सारे हम एग्जांपल्स लेंगे वर्ल्ड वॉर 2 से भी, और आज के समय में रिसेंटली जो साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें से भी। और फिर इसके बाद से सबसे अंत में
मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगा कि मैंने जो ये वर्क किया है, इससे मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, उसके बेसिस पे मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। थैंक यू सर। मैं सभी को इनवाइट करना चाहूंगा आने वाले अपकमिंग जीएसटीएस टॉक के लिए। All right. Thank you, Mr. Rahul. And that is going to be really interesting talk. And I also would like to invite everybody on the behalf of the whole GSTS team, kindly join us on next Sunday, where Mr. Rahul will be addressing GSTS 246. Now, this is the end of the session, and thank you so much, everybody, once again. And to wrap up the session, I would like to invite Dr. Manish Karwar. Thank you, Sailendra. Again, a wonderful GSTS on environment and infiltration, etc. Ecology, environment, and infiltration. So, Nidhi has given us a wonderful idea. There are so many new things, the old things, and also Dr. Mangal Deo has given us a added idea about the infiltration and how these issues are very important into the international relations and political theories. And in the coming speaker also, Mr. Rahul Jaiswal, and he's also going to talk about the print media and international relations and how print media and idea is going to impact the international relations, etc. So now these days, what I'm looking to for every aspect. We are going to theorize and we are going to connect to the international relations, whether it is environment, ecology, and other problems. So definitely, the whole theory is in front of you. That what Nidhi Sarma has given us and what Dr. Mangal Pandey has given us an idea. Because I'm teaching Africa, so the more or less the same thing. They are also and it causes suppose that the migration causes so many ideas, but for my idea, do we think that migration is unnatural? So we'll think about all these things. This is a sincere advice to all political sciences students and the teachers, those who are connected to us, whether the migration is unnatural. If the migration is unnatural, so so if we pretend that this is unnatural environment, then after everything occurred. So firstly, we'll think about I want to any of our scholar work on this, and because how many people they cross the border, and why these are going to be major first in between Bangladesh and India. In front of us, whether Bangladesh is going to stand anywhere, or Pakistan, or Nepal, or Bhutan. So my question is what that we'll see the number, and there are so many internal factors also to what Nidhi has just reiterated the thing that the corruption, etc., etc. So there are so many internal factors also when we are going to talk about the environmental ecology, because now these days COP30 is going on, Belham, from Belham. I think in Brazil, yes, Belham is in Brazil, and COP30 is going on. And yesterday, I'm not involved that, but I heard three conversation in BBC and other news channels about the Africa and about the other world. Because right now, India, China, and USA, they we do not send their delegations COP30 in Belgium in Brazil. The thing is, what we are very sure there are so many researches are going on the environment, ecology, etc., etc. But the correspondent or the discussant there, they told me what happened when they returned back to their own country. What's there going on? So this is a very because here I'm raising this some issue as a young scholar, as a teacher. This is our duty to give our student to first-hand information and very important information about the everything. And as a scholar, Dr. Mangal Dev is doing great job. As a presenter, Miss Nidhi Sarma is doing a great job. But underlying questions are there. So many underlying questions are there. After this discussion, what we are going to do?
in the departments, in the colleges, what we are going to do every time, the same problem. So we are not solving the local problems, like local problems, because we all are involved in somehow involved in the Delhi University. So from last 25 years, I'm looking the a flood-like situation in Patel Chest, in Mukherjee Nagar, and in front of SRCC. And SRCC is not away from the Department of Political Science or Department of African Studies. There are the six departments or eight departments in front, but still the flood are there. So my basic idea is what is the indigenous knowledge system we are working that we are working on this. So why all these floods and all these problems are year by year going on, and every year the Delhi University or other university they pass the students. So why not you work on the local problem in spite of working on infiltrate and the migrants, and Nidhi also took up a place to solve the local problem. Huh? So this is my idea because I'm teaching I'm teaching Africa now these days. So why not we solve local problems first, and automatically we can solve the national problem, state problem, nation problem, and the international problems always. Because that COP30 gives me a very nuanced idea. After all the discussion, what happened? Suddenly people go and do this and this, whether they are involved in all these things, water harvesting, green, only the using the word green, it's not we are following the green revolution, etc. So, but these are the my ideas, and one is the most important things we are working on. A huge money we spend in the infiltration. So where is the Vasundhaiva Kutumbakam? Suppose that maybe this is the controversial statement, or maybe, but if 10 lakh, 20 lakh people came to India, and we can use them amicably. In Africa, uh, in Rwanda, Burundi, in even Tanzania, Mali, so many people, USA and UK deported so many people, and they use them very amicably. So why not we use them as a workforce in India also? So if we perform the Vasudhaiva Kutumbakam, yes, but one more important thing, the security challenges, no doubt. For this, we have to have a very secure border fencing. As you know, that Bangladesh and India border, and still from last 30 years, I've heard that without fencing, so many borders are the without fencing. People roam around here and there very usually. So why not we target through them through the drone facility, so we can less pump the money through on the fencing and all these things. The drones are there, satellites are there, so we can stop all this infiltration by very quick digital ideas. So these are the some sense, and one more thing, we must vocal for the ground reality. So let's think. So the need of more articulated research and basic research. And for the Nidhi Sharma, it's wonderful that you have given us a very wonderful idea, and I'm very thankful to Dr. Mangal Dev. I invited him in the morning, and he wisely and very silently accept my invitation. So thank you very much. Have a nice day for everyone. And for the vote of thanks today, I'll invite uh, one teacher from Shyam Lal Evening College, Dr. Rakesh Kumar Rajak, for giving the vote of thanks. So, Dr. Rakesh, over to you for the vote of thanks. आप vote of thanks के लिए invited है. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you. Thanks to my respected mentor, Dr. Manish Karmawar, sir, founder and advisor, GSTS, for giving me this opportunity. I am Dr. Rakesh Kumar Rajak, Assistant Professor of Shyam Lal College Evening. I feel truly honored to deliver the vote of thanks on behalf of GSTS and team. First, heartful thank you to our guest of honor, Dr. Mangal Dev sir, for gracing our 245 talk and for your kind and inspiring words, and our young and energetic speaker, Miss Nidhi Sharma, to talk about
environmental impact of cross-border infiltration in India, Nidhi has given a new idea, and we are deeply thankful to our beloved Principal Professor Nachiketa Singh sir and respected TIC Dr. Pramod Kumar sir and IQSC convener Dr. Pramod Kumar Dwivedi sir, whose continuous support, guidance, and encouragement helped us bring this wonderful GSTS weekly talk. And thanks to our old and gold Such History Society team also for making sure everything ran so smoothly in weekly. And lastly, I want to say something about borderless environment. माँ की ममता और पर्यावरण का दान, माँ की ममता और पर्यावरण का दान दोनों करते हैं विश्व का कल्याण। माँ की ममता और पर्यावरण का दान दोनों करते हैं विश्व का कल्याण। पर्यावरण हम सभी का है जान, पर्यावरण हम सभी का है जान, इसलिए हमें रखना है इसका पूरा ध्यान। थैंक्स एंड थैंक्स टू डॉक्टर मनीष सर एंड GSTS team.